अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ लॉन्ग वीडियो बनाने लगी हूँ और मेरा टॉपिक है मैजिक ई कॉन्सेप्ट। लेट्स लर्न अबाउट हाउ मैजिक ई वर्क्स। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो अब अगर आप एक प्री स्कूलर के पेरेंट हैं या आप एक ट्यूशन टीचर हैं जिनकी फोनिक्स पे इतनी ग्रिप नहीं है, तो वो मैजिक ई के कॉन्सेप्ट को आज 100% अंडरस्टैंड कर लेंगे और वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों को ये टीच कर सकेंगे टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इससे पहले कि हम मैजिक की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सम sounds of vowels like short and long. So we have 5 vowels, right? A, E, I, O and U. So A is the letter name and A is the sound. E is the letter name and A is the sound of letter E. I is the letter name and E is the sound of letter E. O is the letter name and O is the sound. U is the letter name and A is the sound of letter U. So long sound हम letter name को कहते हैं। जैसे इन पांचों vowels की जो long sounds है ना, वो A, E, I, O and U हैं, जो भी उन letters के नाम हैं। और short vowel sounds हम कहते हैं A, A, E, O, A। ये जो इन पांचों वाउल्स की साउंड्स हम क्रिएट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं शॉर्ट साउंड्स। लेट्स सी व्हाट मैजिक ई विल डू विद ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज मैजिक ई? सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि मैजिक ई है क्या। So magic E is a silent letter. We don't hear it, but it has a magical job. Yes, it has a very magical job. It doesn't have any sound by itself, but it can change the sound of a vowel inside the word. It changes the vowel from a short sound to a long sound. So जैसे कि previous slide में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि जो vowel हैं उनकी 2 साउंड्स होती हैं। लेटर नेम उनकी लॉन्ग साउंड है और जो उनकी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं वो उसकी शॉर्ट साउंड है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ मैजिक ई वर्क्स। For every magic E to work, we use a pattern. Like we have word in this pattern, like we have to have a vowel, then a consonant in the middle, and then magic E. In this way, magic E will work the magic, we will do the magic on the vowel, which will become before a consonant. Okay, so let's see. Example, let's compare some words with and without magic E and discover the amazing magic it does to the vowel sound. Now, I am going to show you some examples. With the help of these examples, you can clearly understand what magic E does with the vowel sound. Okay? Let's start. I hope आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो एनी टाइम यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड से भी स्किप हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि डेलिब्रेटली कुछ भी स्किप किया गया है। वीडियो बनाने के बाद मुझे तो इतनी चीज़ें याद आती हैं कि मुझे ये भी बताना चाहिए था, ये भी बताना चाहिए था, ये भी बताना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। So on the left side, I'm going to show you some words without magic E, and on the right side, I'm going to show you some words with magic E. The words which are without magic E, those are CVC words, like a consonant, then a vowel, and then again a consonant. But the words which will be on your right side, those will contain consonant, vowel, consonant, and then at the end of the word there will be a magic E. So जो ई मैजिक करेगा उसको ज़रूरी है कि वो वर्ड के एंड पे हो। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना कि मैजिक ई को वर्ड के एंड पे होना ज़रूरी है, सो दैट इट कैन डू द मैजिक ऑन द वाउल इनसाइड द वर्ड। सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड, इट्स ख ए फ कैप। फोकस करें कि यहाँ पे मैंने लेटर ए जो है उसकी साउंड प्रोड्यूस की है ए, उसका लॉन्ग साउंड या उसका लेटर नेम प्रोड्यूस नहीं किया। सो ख ए फ कैप, एंड व्हेन दिस वर्ड विल कम विद द मैजिक ई, व्हाट विल हैपन? द मैजिक ई विल गिव इट पावर्स टू लेटर ए and it will become a sound, not a sound. But the letter E will remain silent. K, A, P,
cape. See, there is no sound of letter E itself, but it is giving the power of its sound to the vowel inside the word, and the vowel changing its sound to short to long vowel. Okay, let's see another example. Tap, tap. But when we will add a magic E, it will become ape, tape. See, add, mad, aid, made. Again, you can see there is no sound of letter E. These are all the words which have a vowel letter A. I will show you other examples too. Can, in, cane. At, hat. Ate, hate. See, I hope you understand how vowel letter A words change with magic E and without magic E. And let's see the examples with I sound. So, p in pin, p ein pine. Again, the letter E is giving its power to letter I, and the I is changing its sound to short to long. So, k it kid, k I t kite, r it rid, r I d ride, b it bit, b I t bite, f in fin, f ein fine. Now let's move to the O family, I guess. Yes, let's talk about the O family now. Okay, O family. Sorry. Ha op hop. No, ha op hop. Ha op hope. N ought not. N ought note. R odd rod. R odd road. K odd cord. K odd code. K op cop. K op cope. Now let's see what we have next. We have letter U sound now. So let's see letter U sound. T up tub, tube tube, k up cup, cube cube, k at cut, cute cute, h ug hug, huge huge. Now here is another concept, like letter G is producing a different sound in hug, but it is producing J sound in huge. I will tell you this concept after. Like in this video, we are not going to talk about this one. Okay, us, us, use. So letter we have some words with the E family also, but those are not very common and very difficult for kids too. What words that don't follow magic E? There are some words which don't follow the magic E rule. मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके एंड पे लेटर E आ रहा है. ऐसे वर्ड्स को हम साइट वर्ड्स भी कहते हैं, और मैं इनको भी एक्सप्लेन करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. होपफुली मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ही साइट वर्ड हो. सो फर्स्ट वर्ड है HAVE have, COME come, GIVE give, LOVE love, and SOME some. Now, today I hope you learned that magic E is silent, but it changes the vowel sound from short to long. Can you think of another magic E word? If you can, then just give me your answer in the comment box and leave one magic E word from each family, like A, E, O, U families. Okay, you can write one word using A family, O family, I family, and U family. Okay, you can leave the E family as well. And thank you so much for watching me video. Get in touch. You can follow me on Instagram. Instagram ID is happytots123, and there is a QR code for my YouTube channel. I hope you enjoyed the video.